Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all of you are fine and happy. I'm your teacher Masood Sadiq, and you are watching my English channel Learn English with Masood. Today we are going to discuss full-length paper of National MDCAT. This is for the first one, and after this there will be more FLP to discuss. Let's see the first one, full-length paper of National MDCAT with full discussion. The first part is sentence completion. Here you have 4 questions and there will be 4 options to fill this blank. The first one is, the sun and the other stars we see in the sky are all dash hot, far too hot for life to exist on them. Here we have alpha, intelligently, बड़ी महारत के साथ, skillfully, aptly. Marvelously means excellent, and extremely, बहुत ज़्यादा, too much. And delta is there, stupendously, outstanding, extraordinary. So the answer is extremely hot, far too hot for life to exist on them. इतने गर्म हैं कि उस पर life जो है वो मुमकिन नहीं है. The next one is, such nervous habits are not easy to uproot, and so far as I can see, cannot be dashed by anyone but the boy himself. This is from Why Boy Fail in College. Alpha is evaluated. Evaluated mean किसी चीज की कदर करना, assess करने के meaning में calculate, evaluation. Beta, eliminate, that is uproot, finish, remove. Publish mean शाया करने के meaning में show or displayed, printed. And delta is germinate, mean grow. So here we have the indicator uproot. Uproot को देखते हुए हम ये guess कर सकते हैं कि इसमें जो blank होगी उसमें आएगा eliminated. I can see cannot be eliminated, remove नहीं किया जा सकता by anyone but the boy himself. Question number 3. Chips changed his more dash apartment in schoolhouse for his old original bachelor quarter. वो अपने घर को वापस change किया जब उसने Chips ने. Fabulous, शानदार, excellent, marvelous, famous, very popular. Beta, spectacular, शानदार देखने में, spectacles. And delta, spacious, खुला, वसी. Chips changed his more spacious apartment, खुला, वसी, in schoolhouse for his old original bachelor quarter. Answer is delta. The next one is, modern science has made extremely dash lethal and destructive weapons with scientific method. Here we have again question number 4. Modern science has made extremely dash and destructive. Here we have and, ये आपका addition indicator है. Destructive के synonym को देखते हुए हम यहाँ पर word choose करेंगे. Weapons with scientific method. Alpha, expensive, ये destructive का synonym नहीं है. इसी तरह lethal, मुहलक, dangerous, ये destructive का synonym है. Immovable, एक जगह से दूसरी जगह पर transport करने के लिए, migrate करने के लिए, but we need the synonym of destructive and sharp. The answer is lethal, very dangerous, very harmful. So with the indicator of and, we have to use the word lethal and destructive weapons. The next one is, choose the correct option. Here we have 4 sentences and one of the sentence is correct. The first one is, once a term we had the annual midterm holiday, a Monday off. Beta, once a term we had the annual midterm holiday, a Monday off.
इसमें हमारे पास बीटा में मंडे का एम हमें स्मॉल नजर आ गया है, इसलिए यहां से इसको हम डिलीट कर सकते हैं। Charlie, once a term we had the annual midterm holiday, Monday off. अब यहाँ पर अगर देखें तो अल्फा में वंस के बाद कॉमा लगा हुआ है विच इज नॉट टू बी यूज ओवर हियर, तो अल्फा भी डिलीट हो गया, बीटा भी डिलीट हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद चार्ली। अब हम एक और देखते हैं। Once a term we had the annual midterm holiday, a Monday off. अब यहाँ पर सिंगल ऑफ प्रेपोजिशन यूज की गई है, मंडे ऑफ, जिसमें मतलब उस दिन काम नहीं होगा। So delta is also deleted. So we are left with Charlie. The next one is number is of course it took a long time, that is politics, ये the reward से है। Of course, course mean खुरदरा। अब पहले में भी कोर्स लिखा हुआ है, उसका मीनिंग भी देखें, कोर्स, खुरदरा, रफ, और ये दोनों डिलीट हो जाते हैं। फिर चार्ली में देखें, ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, दैट इज पॉलिटिक्स, इसको होल्ड करें, इसमें आपका कोर्स सही आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स देखें डेल्टा में, इट टुक लॉन्ग टाइम, दैट इज पॉलिटिक्स। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डेल्टा और चार्ली में देखें, यहाँ पर दोनों सेम है, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, दैट का, दैट कैपिटल उसमें कोलन के बाद यूज हुआ है, विच इज नॉट टू बी यूज ओवर हियर। हमने यहाँ पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो वी आर लेफ्ट विद डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 अल्फा, आई एम टायर्ड नाउ because I has been working। अब यहाँ has been से ये डिलीट हो जाता है। बीटा, I am tired now because I am been working, ये भी यहाँ से डिलीट हो गया, am और been यूज हो गए। चार्ली में देखते हैं, I am tired now because I have been working hard since morning। ये कुछ सही लग रहा है आपको तो इसको होल्ड कर लें। डेल्टा देखते हैं, I am tired now because I have been working hard for morning। अब यहाँ पर जो आपको प्रेपोजिशन चाहिए थी वो मॉर्निंग के साथ सिंस, इसलिए ये भी सेंटेंस वैसे ही है, लेकिन फॉर की यहाँ पर गलती नजर आ रही है। तो अल्फा इज आउट, बीटा आउट, एंड वी आर लेफ्ट विद चार्ली। He has been working hard since। अब यहाँ इस सेंटेंस में has been यूज हुआ है, दिस इज आउट, यहाँ पर होना चाहिए था have been। I'm tired now because I am been, यहाँ पर am आ गया, ये भी आउट हो गया आपका। I am tired now because I have been working hard since morning, इसको होल्ड करेंगे। And delta, I am tired now because I have been working hard for morning, यहाँ पर for की मिस्टेक है, आगे आपका स्पेसिफिक टाइम आ रहा है, that is answer is Charlie। The next one is number 8, योर सॉल्यूशंस। अब यहाँ ही पहले ही सेंटेंस में इसमें आप इसको आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका पोजेसिव पर नाउन योर्स है, उसके बाद नाउन यूज नहीं होता है। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, योर सॉल्यूशंस, हियर वी हैव पोजेसिव पर नाउन, दिस इज सॉल्यूशन इज राइट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, इसको होल्ड करेंगे। Your solutions to solve this problem are different from mine। अब यहाँ पर आपने possessive pronoun यूज करना था, जिसके बाद आपने noun यूज नहीं किया होता, तो this is your adjective possessive pronoun, we need noun however here, तो ये भी आउट हो गया। Your solutions to solve this problem are different from mine, ये mine is है, mine has, mine is, ये बिल्कुल केस गलत हो चुकी है। So we are left with only beta। Your solutions to solve this problem are different from mine। The next one is number 9, friend of mine's named, यहीं से आपको इसकी एक गलती नजर आ गई, mine's named Wozzeck repairs watches, radios, alarm clock and sells jewellery। A friend of mine named Wozzeck repairs watches, radio, alarm clocks and sells jewellery। यहाँ पर आपने अब आगे नेम्ड और वोजेक लिख रहे हैं, तो जब हम उस कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए प्रॉपर नाउन फ्रेंड, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ से बीटा भी आउट हो गया। अ फ्रेंड ऑफ माइन नेम वोजेक, अब यहाँ पर
अगर वोज़ेक ना लिखा होता तो फिर हम अ फ्रेंड यूज कर सकते थे। इसी तरह आपका चार्ली भी आउट हो गया। एंड डेल्टा, फ्रेंड ऑफ माइन named Wozzeck repairs watches, radios, alarm, clocks, and sells jewelry. This is your correct answer because here we have Wozzeck. So this friend is without article must be used over here. Delta is your answer. Next, number 10. Whatever my father wanted me to see. Here we have the errors. To see, यहाँ पर होना चाहिए था to see. This is out. Whatever my father wanted me to see, this is correct, was on top of the higher point. Higher point. Here we have comparative. ये भी out हो गया. Whatever my father wanted me to see was the top of the highest point. This is correct one and इसको hold करते हैं. The next one is whatever my father wanted me to saw. To के बाद आपने क्या use करना था? Infinitive. तो यहाँ पर saw आ रहा है, so we are left with Charlie. Whatever my father wanted. See. The next one is spot the error. Question number 11. I patted myself. This is your reflexive transitive verb. All over my front, from what I called my waist up to my head, and I went a bit round each side and little way up the back. अगर हम यहाँ पर अल्फा देखें, this is correct because I patted. अल्फा आपका correct है. All over my front, तमाम जगह बीटा भी आपका correct हो चुका है. Call my waist, कमर WASTE नहीं लिखा हुआ, तो चार्ली भी आपका करेक्ट है. अब गलती कहाँ है? डेल्टा में है. लिटिल का आपको पता है ये आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं और इसका मतलब होता है नथिंग, बट हियर वी नीड समथिंग. अ लिटिल वे अप द बैक. आंसर इज डेल्टा. एरर कहाँ है आपका? यहाँ पर डेल्टा में. द नेक्स्ट वन इज he was supposed to be very brilliant. At any rate, he was modern, friend and sympathetic. अब देखें अल्फा में he was supposed, ये बिल्कुल करेक्ट है. उसको फर्ज किया गया to be brilliant. वो शानदार था, अच्छा था. brilliant एडजेक्टिव यहाँ वर्ब बनाने के लिए हमने be का यूज किया. This is also correct. He was modern. अब यहाँ पर मॉडर्न एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाउन है और सिंपैथेटिक. आपको क्या चाहिए? तीनों में आपको एडजेक्टिव चाहिए. मॉडर्न, फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक. द आंसर इज चार्ली. Question number 13. However, by being so long in the lowest form, यहाँ ही गलती आपको नजर आ रही है. फॉर्म यहाँ पर उसने फ्रॉम आपको डॉज करने के लिए लिखा. तो I gained an immense advantage over the cleverer boy. The answer is Charlie. क्या गलती है यहाँ पर? In the lowest form होना चाहिए. FORM form. If you want to paint well, अगर आप अच्छी तरह को पेंट करना चाहते हो, you must be prepared to practice the crafts. यहाँ उसने apostrophe s यूज किया डेल्टा में. क्राफ्ट्स नहीं आएगा, यहाँ प्लूरल यूज कर सकते हैं. आपको स्किल्स चाहिए इतनी अच्छी, इसमें डेली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन लर्न हाउ टू पेंट. द आंसर इज डेल्टा. Whatever the question was, जो भी कोई क्वेश्चन था, this is from the reward. It was at once understood. This is also beta is also correct. Royal smiles were directed toward him and gentle applause broke off from every hand. तालियों का बजना, जंग का शुरू होना, that is broke up. Answer is delta. The next one is I was seen with the pocketbook. This is from a piece of string. Who saw me? किसने मुझे देखा? Mr. Manana, the harness man, saw you picked up the pocketbook. Here we have alpha. I was seen is correct because of passive voice, and who saw me, this is also correct. And Mr. Manana, the harness man, saw you picked up. Here we have pick, base form. उसने तुम्हें उठाते हुए देखा. Answer is you pick, P-I-C-K, not picked up the pocket. Answer is delta.
Choose the word that is most nearly similar in the meaning of the following word. Number 1, insinuated. Insinuated mean suggest something, direct something, like that. Alpha, understood, very easy word. Thought, comprehended. Beta, blatant. Blatant mean मुंह फाट, बिल्कुल साफ बात करने वाला. Brazen. And reticent, खामोश, पीछे हटने वाला. And delta, indicated. This is the nearest in meaning. Insinuated, that is indicated. The next one is miniature, unspoken, जो बात ना की जाए, hidden हो, silent हो. Bare face, deed, brazen. Blatant, colossal, huge, massive, jumbo. And minuscule, that is the answer. Miniature means small, little. The next one is opposite in the meaning of the following. Direction, choose the word that is most nearly opposite in the meaning of the following word. Hideous, whole knock, dangerous. घनौना जिसे कहते हैं. Irrevocable, जो रिवर्स ना हो सके. Blasphemous, sacrilegious, manhus. Esteemed, cherish, बहुत अच्छा. And charted, that is least. Suggest answer is esteemed, very cherished. The next one is the last one, jeopardy, mean khatarnak, dangerous, lessening, काम करना. And blasting, criticize के meaning में है, taunt करने के meaning में है. Guarantee, surety. और जब खतरा नहीं होगा तो against we have guarantee, and that is irritable, which disturbing. So the answer is guarantee, surety के meaning में. Thank you. If you still have any questions, put your question in the comment box for any question, and inshallah we will have another FLP 2. Thank you.